is demonstration of nested loop, and in this demonstration we are going to write very simple program. The program is to print multiplication table of 1 to 10 using nested loop. Program to print multiplication table of 1 to 10 using nested loop. यहाँ पर हम लोग नेस्टेड लूप में नेस्टेड फॉर के थ्रू हम लोग ये प्रोग्राम लिखने वाले हैं. बट फॉर प्रैक्टिस यू कैन ट्राई एनी नेस्टेड लूप. You can do same program using while within, while using do while within, do while also. The program is very simple. You have to take outer for loop, and in outer for loop I will take $i equals to 1 semicolon $i less than equals to 10 semicolon $i plus plus. And again within this for block I will take inner for $j equals to 1 $j less than equals to 10 semicolon $j plus plus. Okay, and then what we have to do, we have to just multiply this number with this number. We have to multiply I with j and we have to calculate result. So I will take a variable result equals to $i into $j, and this result we have to print. So echo, I will print $result, and then I will also print one space. Okay, I want to print it horizontally, and okay, and then semicolon. And once this inner for loop execution is terminated, I want a new line, so here I will just print BR for new line. This is the simple program which will print multiplication table of 1 to 10, and table will be printed horizontally. One stable, then two stable, three stable, like that. So we will execute this program. This is page 18.php. Okay. You can see the output here. So this is multiplication table of 1, this is table of 2, then table of 3, 4, 5, 6, up to 10. Okay, very simple program. Now what we have to do, we have to print same multiplication table inside HTML table. Okay, same multiplication table inside HTML table. So what you can do for this? So design your HTML page. Okay, this is our HTML page structure. Inside this body tag, we will write one table tag, and inside this table tag, if you observe this output, तो ये आउटपुट भी आप लोगों को एक हमने जो अभी प्रिंट किया है इसको ये टेबल फॉर्मेट में ही इसको प्रिंट किया है, बट नॉट विद इन टेबल टैग. वी हैव प्रिंटेड इट यूजिंग इको स्टेटमेंट. तो अगर आप लोग इस आउटपुट को केयरफुली देखोगे, सो दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, this is third row, and so on. This is 10th row. Okay, and this is first column, this is second column, third column, fourth column, and so on, 10th column. Okay, तो जब HTML के टेबल के रोज और कॉलम हम लोगों को प्रिंट करने हैं यूजिंग फॉर लूप, तो देखो जैसे ही रो 1 है, ओके, दिस इज रो 1, राइट? This is row 1. So column should execute 10 times. So 10 columns should print. Again, the value of row should increment by 1. So for second row, again column should execute 10 times. Again, the value of row should increment by 1. Again, column should execute 10 times. So this is the best application for nested loop.
तो देखो यहां पर इस टेबल के अंदर मुझे कितने रो प्रिंट करने हैं, मुझे 10 रो प्रिंट करने हैं, राइट। और हर रो के अंदर मुझे कितने टीडी प्रिंट करने हैं, 10 टीडी प्रिंट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 10 रो कैसे प्रिंट करना है। ओके, सो दिस इज द सिंगल रो, this particular is a single row, and if you want to print it 10 times, no need to write it 10 times, you have to use a loop that will execute 10 times. तो मैं यहां पर एक लूप लिख लेता हूं, for $row equals to 1 semicolon $row less than equals to 10 semicolon $row plus plus. Okay, and this tr tag I will place within this for. So you all can understand this कि ये लूप अगर 10 बार एग्जीक्यूट हो गया तो इस लूप के अंदर आने वाला ये tr 10 बार आएगा और 10 टेबल रो वहां पर क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। अब उसी तरीके से मुझे हर एक टेबल रो के अंदर कितने टीडी चाहिए, आई वांट 10 टीडीज इनसाइड एवरी tr, आई वांट 10 टीडीज। तो यहां पर भी मैं एक लूप लिख लेता हूं, फॉर $COL कॉलम इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन $COL लेस देन इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन $COL प्लस प्लस। और ये जो टीडी यहां पर हम लोगों ने लिखा है इसको मैं इस इंटरनल लूप के अंदर डाल देता हूं। नाउ यू कैन सी हियर नेस्टेड लूप, separate PHP and HTML. So this for is a for of PHP. I will place it within PHP tag. Okay, tr is a part of HTML, so keep it outside PHP. फिर ये वाला for loop भी आप लोगों को PHP tag के अंदर डालना पड़ेगा। Keep this td outside and then this PHP. Okay. And this particular closing also you have to place inside PHP. It will be like this. And मैं टेबल को यहाँ पर एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर इक्वल्स टू 2, so that table TD will be visible for you. So save it and let's refresh the page and see the output. So you can see here this particular table, right? So in this table you can see 10 rows and in every row there are 10 columns. Now what we have to do, we have to print all these numbers inside this TD. And to print all these numbers inside the TD, what we have to do, we have to calculate this result. Okay. So copy this and where we have to calculate it, inside second loop. Okay, so here I will write $result equals to $row multiplied by $col, and in this TD I have to print the result, and if I print the result directly it will not work because this TD is HTML and this $result is a PHP. PHP variable must come within PHP tag, so here you have to write PHP and you have to print it, so you have to write echo and then closing of PHP tag. Save it, refresh, you will see this. Getting? And now you can format it as you want. ऊपर का जो कोड इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं यहाँ पर. So this is the output. Print multiplication table of 1 to 10 using nested loop. Okay. So I hope you have understood this example. Formatting, you can write inside TD. I will say the style something like this, padding 10 pixel and border solid
2 pixel. So it will be like this.